Hello students, in previous part we have discussed about different types of plastid, chromoplast and leucoplast, and in this part we will discuss about the structure of chloroplast. A chloroplast is bounded with two membranes. There are different shape of the chloroplast, disc-like, ribbon-like, oval shape and many more. Cup shape. We will discuss about the oval shape. Oval shape structure present in higher plants. In mostly higher plants, the chloroplast contain oval in shape. This chloroplast is covered with bounded with two membranes. Both the membranes are smooth. Mitochondria is also covered with the two membranes. The outer membrane is smooth, whereas the inner membrane is found in foldings. But in chloroplast, both the membranes are smooth, and both have same components just like as mitochondria. This one is the outer membrane, and this one is inner membrane. Inner membrane is less permeability than the outer membrane. Inner membrane जो होती है वो less permeability show करती है. क्यों? Because it is made up of maximum amount of protein and less amount of lipid. It show less permeability. This layer contain maximum amount of protein and less amount of lipid. Lipid in less amount or protein in excess amount. Whereas outer membrane contain lipid is excess amount and protein is less amount. This inner structure is filled with the matrix. Matrix, a fluid which contain the inner side, that is known as matrix. A matrix contain ribosomes. Plastid contain its own ribosomes, but the ribosomes are small in size. They contain 70s ribosomes. 70s ribosomes, and a circular DNA just like as mitochondria. It also contains a circular DNA. This circular DNA contains both the polynucleotide A double bonded with T and C triple hydrogen bonded with G. यानी adenine थाइमीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से और ग्वानाइन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से. बोथ द पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड्स आर equal, but in mitochondria maximum polynucleotide chains are made up of C and G वाले, लेकिन इसके अंदर सिमिलर होते हैं. इसका खुद का डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, राइबोसोम इसके पास खुद है. सो इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन. माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट ऑटोनोमस ऑर्गन था क्योंकि उसके अंदर ज्यादा एबिलिटी थी, डीजेनरेट होने की ज्यादा एबिलिटी थी, कॉपी बनाने की रेप्लिकेशन करने की ज्यादा एबिलिटी थी, इसलिए इसको हमने अकेला क्या कहा, ऑटोनोमस ऑर्गन. वेयरएज प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनोमस organs. There are many disc-like structures present in the inner layer. This inner layer, all the membrane, all this surface is known as stroma. This all surface inside the inner membrane is known as stroma. In stroma there are many disc-like structure. These are the disc-like structure. Disc-like structure is known as thylakoid. Thylakoid. These thylakoids are present in a sac, a bundle. एक बंडल के रूप में प्रेजेंट होती हैं, और इस बंडल को सिंगल को क्या बोलते हैं, ग्रेनम. Single bundle is known as granum, and this granum contain
green pigment known as a chloroplast. ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो सैक में चेंज होती हैं ग्रेनम के अंदर, किस प्रकार से, कहां से, इसके इनर जो मेम्ब्रेन है यहीं से वो अटैच रहती है, यहां से अटैच होकर के बनती है ग्रेनम को राइज करने के लिए। इनर मेम्ब्रेन प्रोट्रूड हो जाती है जो कि ग्रेनम से अटैच होती है। देयर आर मेनी ग्रेनम्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जब सैक में मतलब इकट्ठी जुड़ जाती है, एक झुंड बना लेती हैं, तो सिंगल को क्या बोलेंगे, ग्रेनम, और एक और जो दो हो गए दोनों को क्या बोलेंगे, ग्रेना। देयर आर मेनी ग्रेनम्स, सो प्लूरल ग्रेनम आर नोन एज ग्रेना, which contain chloroplast. Green pigments contain. One granum is attached with a lamellae. एक ग्रेनम दूसरी ग्रेनम से लैमेली से अटैच होते हैं। लैमेली कहां है, स्ट्रोमा के अंदर, इसलिए इस लैमेली को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली, जो सब्सटेंस को अंदर बाहर आने जाने का काम करती है। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से भी इसी प्रकार ग्रेनम प्रेजेंट हो सकता है। Chloroplast. There are many granum present in stroma and these are attached with the inner membrane. This inner membrane protrude portion is attached to the grana. Clear? So what is grana? A disc-like structure, thylakoid when arranged in a sac-like structure, single is known as granum, and there are many granum present in the stroma, which makes these in bundles. We can say that grana. Grana present only chromoplast, not in leucoplast. जो thylakoid हैं, thylakoid they help in synthesis of protein. They synthesize photosynthesis process. Photosynthesis process thylakoid में भी होती है, photosynthesis process स्ट्रोमा में भी होती है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। स्ट्रोमा के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, वो होती है इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट, दैट ऑकर्ड इन, दैट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन, इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट के एब्सेंस में होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्ड इन स्ट्रोमा, where is photosynthesis occurred in presence of sunlight, that present in thylakoid. Presence in sunlight, this occurred, this is called light reaction. We will clearly explainly study about the dark and light reaction in the plant physiology chapter, photosynthesis, how the photosynthesis process occurred in plants. This is the structure of chloroplast. A chloroplast contains two layers, outer and inner. Both layers are smooth, but the components just like as mitochondria. Inner layer is less permeable. It means it has maximum amount of protein. This protein layer protrude and jointed with the granum. What is granum? A disc-like structure when there are many thylakoid structure arranged with each other and form a sac structure. This sac structure is known as singular granum, and there are many granum are produced. These all in a group is known as grana. Thylakoid, disc-like structure is known as thylakoid. The photosynthesis occurred in presence of sunlight in thylakoid, whereas stroma also help in photosynthesis process, but this photosynthesis process occurred in absence of sunlight, so dark reaction can be take place in stroma. One granum is attached to the other granum with a lamellae that occurred in stroma, so it is known as stroma lamellae. A matrix which contain circular DNA that has the ability to make its copy, but not according to the mitochondria. It has makes its copy less in amount, so it is known as semi-autonomous organs. The ribosome
Plastid also contain its own ribosome which is small in size 70s, बट इसके बाहर जो जहां ये प्लास्टिड प्रेजेंट है कहाँ है साइटोप्लाज्म के अंदर। इस साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होगा वो तो 80s का ही होगा। क्यों? पहली बात तो न्यूक्लियर इस मेम्ब्रेन बाउंडेड है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्स आल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोट, और यूकैरियोट के अंदर राइबोसोम कितने होते हैं 80s। एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं, सेड वर्ग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर?